Hey everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to talk about PHP injection or PHP code injection. So for that, I'm going to use bWAPP here on my OWASP BWA box. The credentials for the login for bWAPP are B and the password is bug. I'm going to set the security level as low. So let's log in. And इसमें से जो हमने आगे करना है that is here it is PHP code injection. So before we get started, let me give you a little introduction about PHP code injection. So PHP code injection या PHP injection ये इस तरह का अटैक है जहाँ पे malicious कोड को एक PHP एप्लीकेशन में इंजेक्ट किया जाता है ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस या कंट्रोल गेन किया जा सके उस रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन का. ये वल्नरेबिलिटी टिपिकली तब अकर होती है जब प्रॉपरली डेटा को सैनिटाइज या वैलिडेट नहीं किया जा रहा होता. सो नाउ लेट्स सी किस तरह से PHP इंजेक्शन वर्क करता है. लेट मी ओपन माई gedit हियर. एंड जो पहला हमारे पास सिनेरियो है दैट इज वल्नरेबल कोड. एक एप्लीकेशन ऐसा कोड कंटेन कर सकती है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली PHP कोड में इंक्लूड हो रहा है बगैर प्रॉपरली सैनिटाइज या वैलिडेट हुए. ये अक्सर होता है हमारे पास जो कमेंट फॉर्म्स होते हैं, सर्च क्वेरीज या URL पैरामीटर्स के केस में. सेकेंड सिनेरियो हमारे पास हो सकता है मैलिशियस इनपुट. एक अटैकर ऐसा मैलिशियस इनपुट क्राफ्ट करता है एंड जिसमें PHP कोड होता है. ये कोड जो है इट कैन बी एनीथिंग. सिंपल जावास्क्रिप्ट कोड हो सकता है या कोई कॉम्प्लेक्स कमांड हो सकती है जो जिसका काम होता है कि वो आर्बिट्रेरी PHP कोड को सर्वर एंड पे एग्जीक्यूट करवाए. या हमारे पास कोड एग्जीक्यूशन हो सकता है. कोड एग्जीक्यूशन क्या है? जब वल्नरेबल एप्लीकेशन उस मैलिशियस इनपुट को प्रोसेस करती है एंड इंजेक्टेड PHP कोड एग्जीक्यूट होता है एंड वो अटैकर को अलाउ करता है कि वो उस एप्लीकेशन पे कंट्रोल गेन कर सके या उस अंडरलाइंग सिस्टम का कंट्रोल गेन कर सके. सो लेट्स सी इस तरह इस रिस्पेक्टिव सिनेरियो में किस तरह से PHP कोड इंजेक्शन वर्क कर रहा है. So if you see this URL, we have this phpi.php file here. Now we have to see for certain parameters. क्या यहाँ पे कोई ऐसा पैरामीटर है जिसकी पैरामीटर वैल्यू मेरे पेज पे रिफ्लेक्ट हो रही है. फॉर दैट यू कैन ऑलवेज टेक योर टाइम रीडिंग द पेज सोर्स. But I know in this situation here we have this reflecting back your message. अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूँ तो as you can see मेरे पास ये जो मैसेज है that is a parameter here. Message equal test. So if I click on that तो यहाँ पे मैसेज इक्वल टेस्ट पैरामीटर है एंड मैसेज की वैल्यू पैरामीटर वैल्यू यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रही है. नाउ व्हाट इफ आई ट्राई टू ऐड डिफरेंट कमांड्स हियर along with this test parameter. फॉर एग्जाम्पल आई कैन ट्राई विद सेमीकॉलन. सेमीकॉलन को यूज़ किया जाता है जब हमने दो या दो से ज़्यादा कमांड्स रन करनी हो अपने टर्मिनल में. सो इट सेमीकॉलन इंडिकेट्स कि मेरी एक यहाँ पे कमांड 1 एंड हो रही है, इसके बाद सेकंड कमांड एंटर हो रही है. यू कैन यूज़ पाइप एज वेल फॉर दैट या एम्परसैंड भी यूज़ किया जा सकता है. सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सिस्टम एंड सिस्टम parentheses एंड डबल इन्वर्ट हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास में मैं अपनी कमांड एंटर करूंगी. इट कुड बी एनीथिंग लाइक हु एम आई एंड एज यू कैन सी www डेटा यहाँ पे जो यूजर नेम है मेरा वो शो हो रहा है. सो इट मीन्स दिस इज वल्नरेबल टू PHP कोड इंजेक्शन एंड यू कैन यूज इट फॉर योर ओन एडवांटेज to read etc password, etc shadow or anything you can do. You can open a reverse shell here. So you can try for other directories as well like pwd, that's for print working directory, and that is OWASP bwa git bWAPP. Or you can go for or favorite one cat etc password. And as you can see we can read the etc password file here. You can find the usernames here, but in Linux case the passwords are always stored in etc shadow. So let's see if I can read that as well.
एंड एज यू कैन सी मेरा ETC शेडो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा. एंड व्हाट्स द रीज़न फॉर दैट? बिकॉज जो मैं करंटली लॉग इन हूँ www डेटा के तौर पे. लाइक आई डू नॉट हैव एडमिन प्रिविलेजेस. जस्ट अभी मैंने चेक किया हु एम आई एंड द यूजर नेम आई एम करंटली logged in as that is www data. So ETC shadow के लिए मेरे पास admin privileges नहीं है. So what can we do in this case here? So to read ETC shadow here, you can try to open a reverse shell here using netcat or any other certain one-liner. But I will leave that to you. Try to open the shell here and do tell me in the comment box, did you successfully read the ETC shadow file? And that was all, a little bit introduction on PHP code injection. So I hope you liked the video and learned something new. See you in the next video.